तो आज हम डिस्कस करेंगे डे 3 का फिफ्थ क्वेश्चन, द ग्रिड यूनिक पाथ। सो व्हाट द क्वेश्चन स्टेट्स, हमें क्या गिवन है? हमें एक m इंटू एन ग्रिड गिवन है या फिर m इंटू एन मैट्रिक्स गिवन है, और हमें क्या करना है? m इंटू एन मैट्रिक्स गिवन है जिसपे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमें एक रोबोट गिवन है। ठीक है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे हमें एक रोबोट दे रखा है, तो हमें क्या निकालना है? और बॉटम राइट कॉर्नर पे हमें एक फिनिशिंग लाइन दे रखी है, तो हमें नंबर ऑफ पॉसिबल वेज निकालने हैं सो दैट द रोबोट कैन रीच द फिनिशिंग लाइन। सो ऑल द पॉसिबल यूनिक वेज सो दैट वी कैन रीच द फिनिशिंग लाइन। सो हमें क्या गिवन है? देयर इज एन m into n grid, robot is present initially at top left corner, that is this. The robot tries to move to the bottom right corner, that is this. The robot can move either down. Okay, so the given condition is that the robot can move only from a particular point. It can move only downward or one position rightward. Okay, uh, the robot can move either down or right at any point. Given the two number m into n, return the possible unique path that the robot can take to reach the bottom right corner. So we have to return the possible unique path that that the robot can take to reach the bottom right corner. So what approach should we follow? तो हम इसे करेंगे कैसे? सो बेसिकली एट द स्टार्टिंग पोजीशन, तो हमारा रोबोट कहाँ पे है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। सो आवर रोबोट इज प्रेजेंट इन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर। सो एट अ फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजीशन वी कैन टेक आइदर राइट, sorry, we can take either one position to the right or one position to the bottom down. Okay, so हमें टोटल पॉसिबल नंबर ऑफ वेज निकालने हैं ताकि हम फिनिश तक पहुंच सके, दैट इज प्रेजेंट इन द बॉटम राइट कॉर्नर। सो हमें चॉइस है फ्रॉम अ पर्टिकुलर पोजिशन टू आइदर मूव डाउनवर्ड और टू मूव राइटवर्ड वन स्टेप। सो जहां भी हमें चॉइस गिवन होती है, हमें पता है हमें वहां क्या लगाना होता है? रिकर्शन लगाना होता है। तो उसी से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो व्हाट विल डू इफ वी आर प्रेजेंट, सपोज अगर हम इस फिनिश लाइन की रो पे प्रेजेंट है, तो क्या हम इससे नीचे जा सकते हैं? इफ वी आर प्रेजेंट एट द फिनिश रो, दैट इज द बॉटम रो, सो can we move downward? We cannot move further downward. So the step we can take is only rightwards. Okay, so the only choice we have is to move rightward. The same case is when we are present in the finished column. If we are present in this column, the choice which we have is to move downward only. We cannot move rightward further. We only have the choice to move downward. So this is the condition. This is the base condition. And what other condition is that if we have reached the bottom right corner, we return that we have found one possibility. We have found one possibility so that we can reach the finishing line. So how will we write its recursive code? We have found all the base conditions. First base condition is that, first main condition जो है हमारी, if we are present at last row, that means finish वाली row, and j equals to n minus 1, that is we are present at finish वाली column, that is हम इसी वाले ब्लॉक पे खड़े हुए हैं, ब्लॉक ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारी एक पॉसिबिलिटी मिल गई है, सो वी विल रिटर्न वन। वी हैव फाउंड वन ऑफ द पॉसिबिलिटी फॉर आवर आंसर।
Okay, and if one more case which we have identified is if we are present in the row, if we are present in this row, the only choice which we have is to move rightward. मतलब हमें सिर्फ कॉलम चेंज करनी है. सो अगर हम अपना रिकर्सिव फंक्शन ऐसे लिखें इंट सॉल्व, जिसमें हमारी i और j है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे? हमें सिर्फ क्या चेंज करनी है, क्योंकि हमारी रो तो चेंज होगी नहीं, हमारी कॉलम चेंज होगी. द ओनली चेंज विल अकर इन द रो, इन द कॉलम. सो हम कॉलम को एक बढ़ा देंगे. दैट मीन्स वी ओनली मूव राइट वर्ड. अगर हम उस कॉलम पे प्रेजेंट है, इफ वी आर प्रेजेंट एंड at this column, the only choice we have is to move downward. Okay, the only choice which we have is to move downward. So what you'll do, we'll return, we have to change the row because column remains the same. And if these cases do not occur, then what choice uh, we have? From a particular point we can either move downward or we can move rightward. So we'll return, what will return, we'll return that from one possibility we can move rightward, and from one possibility is that we can move downward. Okay, so this is the recursive code that we'll write to solve the problem. This is absolutely correct, but this code will give us the time limit exceed error, because at every point we have to call this solve recursive function if we have not reached the finishing line. So if we have to make our recursive code more efficient, we have to use what? DP. तो हम इस कोड को मेमोजाइज कर देंगे और मेमोजाइज कोड करके हम अपना आंसर रिटर्न कर देंगे. तो मेमोजाइज, अगर आपको मेमोजाइजेशन आता है तो बस रिकर्शन को सिंपली मेमोजाइज करना. अगर तुमने मेमोजाइज नहीं पता तो प्लीज मैं रिकमेंड करूंगा मेमोजाइजेशन पढ़ लो. कुछ नहीं है, बहुत इजी है. उसके बाद अगर ये रिकर्सिव कोड समझ में आया है तो आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है. बस द वन थिंग यू हैव टू लर्न अबाउट इस मेमोजाइजेशन, जो कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें. सो ये उसका सॉल्यूशन है. मेमोजाइजेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम एक 2D वेक्टर इनिशियलाइज कर लेते हैं, बिकॉज वी हैव टू मेक वी हैव टू मेक काउंट फॉर द चेंजिंग वेरिएबल. जो भी चेंजिंग वेरिएबल है जिसमें हमारा i और j है, इसमें से हम 2D मैट्रिक्स ले रहे हैं, जिसमें हम अगर जो रिकर्सिव कॉल पहले हो चुकी है उसका आंसर स्टोर कर लेंगे और उसको दोबारा रिकर्सिव कॉल नहीं करेंगे. इससे हमारी नंबर ऑफ रिकर्सिव कॉल डिक्रीज हो जाएंगी और हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी. ठीक है, हमारी रिकर्सिव कॉल डिक्रीज हो जाएंगी जब हम 2D मैट्रिक्स, क्योंकि हमारी जो चेंजिंग वेरिएबल है उसके हिसाब से हम 2D वेक्टर में अपना आंसर स्टोर कर लेंगे फॉर पर्टिकुलर रिकर्सिव कॉल, जो कि पर्टिकुलर i और j वैल्यू के लिए होगी. उसकी वैल्यू हम 2D मैट्रिक्स में स्टोर कर लेंगे. ठीक है, और जब वो पर्टिकुलर i और j का केस कर होगा, अगर वो रिकर्सिव कॉल पहले ही हो चुकी होगी तो वो वहां पे ही रिटर्न हो जाएगी. ठीक है, हम वो रिकर्सिव कॉल फर्दर नहीं करेंगे. वही वाली चीज है, हमने एक 2D मैट्रिक्स इनिशियलाइज की -1 से और उसको हमारे सॉल्व फंक्शन में भेज दिया. उसमें क्या क्या भेजा हमने? i और j, बिकॉज at the starting we are present in the top left corner. We are starting at the top left corner. We have passed our matrix row and column to the solve function and our t matrix, जिसमें हम अपना रिकर्सिव कॉल का डेटा स्टोर करके रखेंगे. सो
जैसे ही हमने रिकर्शन में एक्सप्लेन किया था, इफ वी हैव रीच्ड द bottom right bottom right corner, we have found one of the possibility of our answer, we will return 1. If we are present in if the recursive call for the particular I and j value has been made, then we will return the answer for the particular recursive function for I and j, because उसका आंसर हमारे 2D वेक्टर में स्टोर होगा, that will be present in the 2D vector. Okay, if we have reached we have reached the last the bottom row, then the only choice which we have is to move rightward. The same thing we are doing. We are only changing the column and storing it into our 2D vector, because for a particular I and j value we are storing its value, recursive फंक्शन की वैल्यू हम 2D वेक्टर में स्टोर कर लेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे. सेम फॉर j वैल्यू, इफ वी आर प्रेजेंट इन द last column, then what possibility which we have? The possibility is we only move downward, we can only move downward. So the same thing we are implementing here is and storing the value for the recursive call in our vector and returning the vector. Else, what choices would we have? We can either move downward, or we can either rightward, and storing its the value of the recursive call in our 2D vector and return vector, and so that our time complexity will be reduced. Okay, so for present case we'll run our code and it'll run successfully and we'll submit. Okay, so that is how we'll solve the unique path problem. If you have any query, then feel free to ask me. Bye.